Yes, good afternoon, students. Good afternoon to all. So today let us start with the that means respiration. Already we have seen it is of two types. Okay, respiration, that is cellular respiration. It is of two types. So that we were discussing. Now, one is aerobic respiration, and the another one is anaerobic respiration. So, in anaerobic respiration, the first one, that is in yeast. So here you can see that this is converted into, the food is converted into, yes, who will tell me, students? In yeast, the food that is broken down is converted into what? Can you tell me? Yes, who will tell? Students, tell me. ईस्ट में जो हमारा ईस्ट है वो फूड को किसमें कन्वर्ट कर लेता है? यस, सो गरिमा इज सेइंग अल्कोहल. सो फूड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल. Isn't it? It is converted into alcohol and energy. Okay. Then next, yes, in muscles, because in our body, that is in human beings, if we take only human beings, so the anaerobic respiration does not take place in all over the body. It takes place in very few organs, and that is the muscles in which the anaerobic respiration takes place. है ना? बाकी organs में नहीं ले सकता है. Only anaerobic respiration जो है वो muscles में ही होता है. Isn't it? So, and it takes place in muscle, and the breaking of the food takes place. The food is broken into what? Food is broken into, yes, so lactic acid. Into lactic acid. Understood, students? This is clear? Okay. ईस्ट जो है फूड को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, लेकिन हमारे बॉडी में फूड कन्वर्ट हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, and then the swelling takes place. Sometimes it takes time to dissolve. आपने देखा होगा अगर हम ज्यादा एक्सरसाइज हार्ड वर्क कर लेते हैं तो फिर ऐसे क्रैम्प्स आ जाते हैं, फिर उसको थोड़ा मसाज करना पड़ता है, धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है लैक्टिक एसिड, बिकॉज द सर्कुलेशन स्टार्ट्स एंड दिस सर्कुलेशन विल हेल्प, this will supply the oxygen to the body, to the lactic acid, and the lactic acid is again further converted into carbon dioxide. धीरे धीरे कन्वर्ट होता है और इस तरह से ये लैक्टिक एसिड भी पूरा डिसॉल्व होने लगता है. ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? सो वी हैव सीन इन ईस्ट the food is converted into alcohol. In human beings, that is the muscles only, the we can say anaerobic respiration it takes place. Okay, so what are these yeast? These are single celled organism. They respire anaerobically, and these
अल्कोहल नाम सुना होगा, and that is the reason why disease is used in making wine and beer. Okay, so that is the reason why it is used in making wine and beer. तो इसका इस्तेमाल होता है फर्मेंट किया जाता है, फर्मेंटेशन, लाइक इन शुगर फैक्ट्री आल्सो यू माइट हैव सीन शुगर केन को फर्मेंट किया जाता है और अल्कोहल बनाया जाता है। वैसे ही फ्रूट्स को फर्मेंट करके वाइन बनाई जाती है। फर्दर अगेन सम मटेरियल्स दे आर बार्ले, माल्ट जो है they are fermented and beer is made. Beer जो it is just like alcohol, थोड़ा सा जो फ्लेवर है वो ऐसे ही आता है वाइन बियर का, अल्कोहल का। Okay, so these are made from yeast. So yeast is used in we can say that in almost big industries of beverages, जहाँ जहाँ पर ये अल्कोहल वाइन बियर बनती है वहाँ पर yeast जो है वो यूज होता है। Understood students? And not only in beverages, also yeast is used in bakeries. Okay, बेकरी में बेकिंग प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है। क्लियर? So इतना समझ में आ गया है? If you have understood that, write you. Yes, students, if you have understood this anaerobic respiration in yeast, anaerobic respiration in muscles, if you have understood, write down you. Only 3 students they have understood. What about the others? And today what has happened? See, the attendance is very less. Why, students? So और एक बात students, और एक बात after Diwali vacation immediately we are starting with the that is with the term exam. Okay, and you will be getting the syllabus also regarding that. Understood? तो दिवाली वेकेशन के बाद हमारा टर्म एग्जाम भी शुरू होने जा रहा है, and likewise you will be getting the syllabus also. Understood? Is it clear? So you people also start with your revision and all. Understood? Okay. So this is about anaerobic respiration. Anaerobic respiration. So aerobic respiration में क्या होता है? The simple one, that is food with the help of oxygen is converted into carbon dioxide, energy, and water. Isn't it? This is aerobic respiration. When we say aerobic, that means in the presence of oxygen. Aerobic respiration is the respiration which takes place in the presence of oxygen. तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन है तो एनाएरोबिक नहीं होगा. That is because sometimes our body may require more oxygen, and then because of the lack of oxygen, the body starts respiring anaerobically. तो जैसे मैंने बताया है कि हमारे मसल्स में अगर हम दौड़ रहे हैं और बहुत ऑक्सीजन की जरूरत है, फिर भी हम दौड़ रहे हैं, तो
फिर पैरों में, हाथों में क्या हो जाएगा? द मसल्स दे अंडरगो अनेरोबिक रेस्पिरेशन, और फिर दूसरे दिन मसल्स जो है उसमें स्वेलिंग आ जाएगा, मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड, lactic acid is produced. Okay, understood? And this leads, क्योंकि मसल्स के अंदर देखो हमें तो चलना है, हम तो इतने जल्दी तो मर नहीं जाएंगे, तो कैसे भी होके ऑक्सीजन दैट इज इट इज एनर्जी it is produced, so that is in the another way that is called as anaerobic respiration. तो अनाएरोबिक रेस्पिरेशन से क्यों ना हो, लेकिन हमें ऑक्सीजन मिलते रहता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? So yes, Santosh, what is your question? Break down the glucose occurs with the use of oxygen. Yes, that is in the aerobic respiration. तो हमारे मसल्स में जैसे बहुत अगर हम कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं और हमें ऑक्सीजन कम पड़ रहा है तो तुरंत एनर्जी तो मिल जाएगा, बट एट दैट टाइम द फूड दैट इज ब्रोकन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, एट दैट टाइम द फूड व्हिच इज कन्वर्टेड इट इज इनटू लैक्टिक एसिड, इट गिव्स लैक्टिक एसिड। अंडरस्टूड माय स्टूडेंट्स? So anaerobic respiration, शार्दुल, anaerobic respiration जो है वो जब हमारे पास ऑक्सीजन कम हो जाता है, ऐसा नहीं कि बिना ऑक्सीजन के हम नहीं कह सकते हैं, जब हमारे पास ऑक्सीजन कम हो जाता है तो तब it takes place without oxygen and starts the respiration like in the muscles. मैंने एग्जांपल दिया कि अगर तुम्हें दौड़ने के लिए कहा तो बहुत दौड़ना है, बहुत दौड़ना है, बहुत दौड़ना है, तो when we are running at that time or if we are doing some hard work, तो एक साथ तो इतना ऑक्सीजन नहीं आएगा, so at that time what happens? that time ऑक्सीजन जो है वो हमें मतलब ऑक्सीजन कम हो जाता है लेकिन एनर्जी मिलते रहता है, तो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगा? Then the lactic acid is produced instead of carbon dioxide in the muscles, क्योंकि हमारे मसल्स तो काम कर रहे हैं, we are not trying to do it but we are still doing the work, hard work। फिर दूसरे दिन क्या होगा कि हाँ हमारा मसल्स पेन हो जाएंगे, हाँ मसल्स में क्रैम्प्स आ जाएंगे, so this shows that here in that muscles now anaerobic respiration has taken place, क्योंकि हम ब्रीदिंग कर रहे हैं लेकिन मसल्स के अंदर पूरा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है। that time the muscles they give lactic acid, so instead of carbon dioxide here in the muscles now lactic acid is produced। Understood students? Here lactic acid is produced। हाँ, फिर धीरे धीरे अगर हमने काम बंद कर दिया है then slowly if we are doing massage or if we are doing hot water bath, है ना, गर्म पानी में पैर डाल के रखेंगे या फिर धीरे धीरे मसाज करेंगे, फिर धीरे धीरे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा जो हमारे मसल्स को और ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। सो इस तरह से धीरे धीरे लैक्टिक एसिड इज गेटिंग dissolved। Understood students? Now have you understood anaerobic respiration? ये कब होता है? Anytime it doesn't take place। Students remember that हमारे बॉडी में हर समय हमेशा anaerobic respiration नहीं होता है। अगर हम एक्स्ट्रा more than our need, if we are using the oxygen more than our need, if we are using the oxygen, जैसे बहुत दौड़ रहे हैं, sometimes we are running and running, या sometimes we are doing more hard work, physical hard work,
that time oxygen deficiency may occur. So Shardul, लेस ऑक्सीजन सप्लाई कब होता है? जब हम एक्स्ट्रा काम कर देते हैं ना, जैसे बहुत दौड़ रहे हैं, किसी ने हमें दौड़ने के लिए बता दिया एंड यू आर नॉट कैपेबल ऑफ रनिंग, आपकी आदत नहीं है दौड़ने की और आपको बताया गया कि यहाँ से पूरा ट्रांसपोर्ट तक जाओ, दौड़ो दौड़ो, तो व्हाट विल हैपन? आप दौड़ते बहुत कैसे, so at that time एनर्जी भी चाहिए तुम्हें, तो एनर्जी के लिए फूड इज प्रोपर, बट दैट टाइम लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? हाँ, यस, एग्जैक्ट संतोष. तो कब? सो व्हेन वी डोंट हैव इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जैसे बहुत जल्दी दौड़ने के लिए कहा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो एट दैट टाइम आल्सो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगा. या हमें यहाँ से वहां तक दौड़ने के लिए लगाया तब भी ऑक्सीजन कम हो जाएगा. So this part now everyone have understood. First students tell me, अभी ये क्लियर है? Anaerobic respiration and aerobic respiration. Aerobic तो सिंपल है, breaking of the food into carbon dioxide, energy and water. Simple, with the presence of oxygen. Okay? Yes, Garima. Now, difference that I will tell you. Don't worry. Cellular respiration and aerobic respiration. Yes, we are going to see that also. Difference. Now, when I am discussing about the respiration, all these respiration they are taking place in cell only. Understood? ये सब सेल के अंदर की बात कर रही हूँ मैं. मसल्स यानी सेल्स, isn't it? मसल्स यानी हमारे एक एक सेल बॉडी के पार्ट में, बॉडी के अंदर. So all cellular respiration only, which is taking place in the cell. This all we are discussing about the cell only. Okay? Understood? Okay, so students, Mahalakshmi, you are asking, ma'am, if muscles are anaerobic respiration. So for aerobic respiration, so muscles, that means I am not saying that muscles में anaerobic respiration ही होता है. It doesn't mean that in muscles only anaerobic respiration takes place. नहीं, muscles में both. If we are normal, everyone listen carefully now, students. Listen carefully. See, in normal condition, once again I am telling you, in normal condition, in our body, in the muscles, in the cells, aerobic respiration takes place. Aerobic respiration takes place. Understood? Anaerobic respiration जो है वो सिर्फ कब होता है? जब ऑक्सीजन कम हो जाता है. Understood now? When oxygen becomes less, that time only anaerobic respiration takes place, and only in muscles. और वो भी कब? Not all the time.
कब कब anaerobic respiration होगा? If we are doing any physical hard work, कोई extra work, that time only anaerobic respiration it takes place. Have you understood, students? Now is it clear? Once again I am asking you, कोई भी doubt हो तो पूछो. Yes. Yes, any doubt you can ask. Yes, Garima. Whenever there is lack of oxygen, यानी कि mostly when we are doing some hard work, है ना? बहुत काम करेंगे, तो we will become tired, we will become breathless, we need more and more oxygen. तो उस समय हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है. Yes, at that time only. Normally, we are aerobically breathing. Normally, we all are breathing aerobically. But ज़्यादा work, कोई exercise, कोई काम, है ना, hard work, extra. So that time we need more energy, we need more oxygen. That time there may be lack of oxygen. So at that time only lactic acid is produced. Understood? Clear to all? Yeah. सबको समझ में आ गया? Everyone? Okay. So now next part. Okay, everyone have understood now? कोई भी डाउट नहीं है. Aerobic, anaerobic, cellular. Cellular means the respiration that is taking place in our cell. And this all we were talking about the cellular respiration only. That is taking place in the cell. Okay. So now as I told you, breathing is one part of respiration. Breathing is not respiration. Breathing is one of the part, isn't it? जैसे cellular respiration हो गया. Now another one is breathing. These also come under respiration. Breathing. Okay. Now what is breathing? So students, now just you can see that if we are closing our nose and mouth, nostrils and mouth. So what will happen to us? Hardly we can survive or we can live for 2 minutes, isn't it? This is minimum. So if we are closing our nostrils, closing our mouth, so 2 minutes or hardly it might be one. Some of them might live without opening the nostrils and mouth for 1 minute also, isn't it? So this means that
this means that we cannot leave closing our nose, closing our mouth. Why? Because we are always taking in oxygen and giving out carbon dioxide. So this process, this mechanism is called as breathing. So this is breathing. And before that, the process that you have seen, breaking down of the food into carbon dioxide and energy with the help of oxygen is called as respiration. So students, now is it clear to you what is breathing and what is respiration? Breathing is just taking in air or taking in oxygen and giving out carbon dioxide. Okay, so students, what is breathing? Taking in oxygen and giving out carbon dioxide. Is it clear? So this process, because it is a mechanical process. Why we say mechanical? Because it is just taking in oxygen and giving out carbon dioxide. तो उसमें सेल के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता है, बट रेस्पिरेशन के समय रिएक्शन होता है ना? फूड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, but this is not converting anything. It is just taking in oxygen and giving out carbon dioxide. So it is a physical, we can say, process or mechanical process, क्योंकि इसमें हमारे organs चलते रहते हैं मशीन के जैसे, taking in, giving out, taking in, giving out. So this is a mechanical process. Understood, students? इतना क्लियर हो गया है? Is it clear to you? Understood? Yes. So what is breathing? It is a process. The taking in air and giving out carbon dioxide. Taking in air. The air which we are taking is rich in oxygen. Taking in air. When we are taking in air, it is rich in oxygen. And this is giving out air that is rich in carbon dioxide. Okay, so the intake of oxygen and giving out, yes, so intake of air and exhale, this process is called inhalation. This process, taking in air or taking in oxygen, that is called inhalation, and giving out carbon dioxide, this process is called exhalation. Yes, students, different processes मिलके बनता है breathing.